ma'am had been a part of a team of in SQA, and everybody had been understanding this, and it is very compulsory to be filled. And there are so many things in that, it will take more than a day to understand that. But ma'am, in precise, we'd like to know from you that what is the main content of SQA, what is, many a time we feel कि कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? So what is the use of that, and what are the inputs you want to give on the topic school quality assessment? Over to you, ma'am. Honestly speaking, I was a part of the pilot team of SCORE. So we were around 20 principals all across CBSE schools in India and abroad, and we were starting to be trained in SCORE. For the first 3-4 months, everything was flying over our head. Exactly the same question, ज़रूरत क्या है? Now I will not go on telling you what is SCORE, because everybody of us, they know what is SCORE. It's been a year. We have all gone through the SCORE manual now. It has 7 domains and 89 subdomains. We need to submit it every year by 31st of December. Simple. Now what is the logic behind it? So when you fill up the form, you should understand the logic behind it. Colleges have NAC. On the parallel lines, CBSE wanted to have SCORE, which is School Quality Assessment and Assurance. It is not accreditation. Colleges के आप देखोगे तो वहाँ आता है A+, A++. जब ये grade मिलता है तो this is accreditation. SCORE में as of now there is no accreditation. जब initially pilot project हुआ था तो there was a suggestion that there are 7 domains in SCORE. So we had also given them a logo for SCORE that it will have 7 hexagonal beehive kind of a thing. Supposing a school is on level 2, they will get 2 colors of the hexagonal bee which they can attach to the school name, जैसे British Council का ISA logo, right? बहुत सारा काम हुआ उस पे, but as of now the word accreditation has been taken off so that SCORE doesn't become a threat. So the full form of SCORE as of now is School Quality Assessment and Assurance. पहले तो we should have that in mind. It is nowhere a threat. Second very important thing is, I am in rural Punjab. Ma'am is in Mumbai. She is in Delhi maybe. He is in a tier 2 city. How can we all be judged by one parameter? Right? Again, since there is no threat, I know I have to go to Delhi. He knows he has to go to Delhi. She knows. We all have a common target, which is the improvement of the school. I may start from Fagwada. He may start from Meerut. The journey may start from wherever. So it is unique. मेरे स्कूल की जर्नी मेरी यूनिक, इनके स्कूल की जर्नी इनकी यूनिक. The first time that we heard of SCORE, इस तरह का एक मैनुअल आया उसमें APP वाला. What we did in Amritsar was, तूने बना लिया, भेजना मैं copy paste कर. We sent the same format all 87 schools of Amritsar. अब उसमें हुआ क्या? They were asking what is your name and we were giving I live in Chatham. इतना फर्क था. So now SCORE का intent, it is me to my school. I may be doing something, you may be doing something. So there is no threat. Now another point. There are 7 domains. 7 domains means they are covering each and every aspect of the school. अगर आज आप जाके मैनुअल दोबारा से देखोगे, उसमें सबसे हेवी डोमेन है करिकुलम एंड पेडागोजी. 40 मार्क्स मैक्सिमम, दैट इज डोमेन 1. उसके बाद डोमेन कौन सा है? कैन यू हेल्प मी? सबको पता है स्कोर क्या है? सेकेंड डोमेन गूगल, फोन है सबके पास. Which is the second domain? Infrastructure. Yes. Right? Third, randomly बता दो, second, third करके नहीं बताओ. There is management and governance. There is leadership. Right? Yeah. There is beneficiary satisfaction. एक बड़ा important रह गया. Inclusivity. Inclusivity comes at number 4. Center में है inclusivity. Means it is the heart of
इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन. मेरे टीचर्स खुश नहीं है, मेरा इल्यूमिनाई कनेक्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो होगा क्या? देयर इज अ लिमिट. देयर आर 10 points in infrastructure. I may get a 10 on 10 there, but I am getting a 0 in beneficiary satisfaction. So what does CBSE want? There should be a balance. Right? आप इसमें भी 4 नंबर लो, आप उसमें भी 4 नंबर लो. Then some schools, what we are doing is, the principal and a couple of senior teachers, they are sitting in the office and filling up the form. It won't work like that. I will give you a very valid example. जैसे घर में शादी होती है, सबको पता है शादी है, कोई ऑड आवर पे जा रहा है, वो पूछता है कहाँ जा रहा है, वो कहता है धोबी से कपड़े लेने जा रहा हूँ. वो क्वेश्चन नहीं करता क्यों, क्योंकि शादी है. Right? So SCORE is like a whole family unit job. Everybody should know. Another very important aspect. When we were doing our presentations, they would say your file, your presentation should be self-speaking. जब भी आप SCORE के लिए documents बनाते हो, the document should relate the story. मैंने PDCA cycle है एक उसमें. Like he says, 10 minutes that he is going to permit me are too short. It is a 2-day workshop. Right? PDCA cycle, plan, do, check and act. Everywhere that you do, आपकी planning नजर आनी चाहिए, आपकी doing नजर आनी चाहिए, आपकी checking नजर आनी चाहिए कि आपका plan कितना valid हुआ, कितना निभा पाया. उसी के साथ learning outcomes आया. Now we are writing learning outcomes in our lesson plan. Teacher ने Pythagoras पढ़ा दिया, but how many students actually learned it? How many students can actually do it? Those are the learning outcomes. अब now let me come to the result. ये मैनुअल आप पढ़ लो, 7 डोमेन्स हैं. एक बड़ी प्यारी चीज उसमें जो दी गई है, 7 डोमेन्स को जब आप स्टडी करेंगे तो देयर आर पैरामीटर्स. If you are completing the first 3 parameters, you are at level 1. If you are completing the second 3 parameters, you are at level 2. There are 4 levels, level 1, 2, 3 and 4. उसी पेज को जब आप पलटोगे तो उसके पीछे लेवल 1 के दिए हुए हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं तो लेवल 1 पे. Right? Now you go and read the manual again, you will understand it better. Now coming to the final thing. Randomly the computer is going to pick few schools जिनकी physical quality review होगी, जिसको हम inspection समझते हैं. Right? I'll be very soon going to a Gohana school. This is going to be my 5th inspection. अब जब इंस्पेक्टिंग टीम आती है उसमें और जब आप भरते हो, there are around 1100 questions that you fill up. So don't wait for 31st December. उनका सिस्टम भी हैंग होना, 1100 क्वेश्चन के जवाब देने, उनका लॉजिक देना, उसको टाइम लगेगा. So target for 30th November. Right? And you should have teams who understand SCORE very nicely. Now when this team is going to go, normal CBSE affiliation देता है तो 1 दिन की inspection करता है, पर SCORE की inspection के लिए 2 दिन लग देता है वो. All 1100 questions have to be reviewed, checked and then evaluated again. अब inspection किन स्कूलों की आई अभी तक, जैसे I am going for the 5th one. एक स्कूल जोधपुर में आया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा SCORE में नंबर कितने थे? He said we filled 100. I said perfect. अब हमें भुगतो. How can a school be so perfect? They are not asking you to be perfect. मैं कहा how did you manage 100? I am surprised. I want to learn. Ma'am, I'll say in between. It was happening everywhere in the country. कितने मार्क्स करने हैं, उतने मार्क्स ना करना कि मैम आ जाए. अच्छा. It is a reality. और मजे की बात मैं आपको बताऊं, we as principals we understand SCORE. वहाँ का प्रिंसिपल, छोटी सी जगह नागौर करके जगह थी, जयपुर से 2.5 घंटे का रास्ता है, a very very small place. Principal was very aware. हर सर्कुलर पढ़ा हुआ उन्होंने, SCORE का मैनुअल सारा पढ़ा हुआ. He knew everything. I would ask a question, he will have an answer. I said, how did you fill 100?
He said, मैम मेरे घर में शादी थी, मैंने ऑफिस के क्लर्क को बोला पार्क कर। मैं कहा फुगत, बाजरे की रोटियां खिलाई उसने बड़ी मजेदार। एक वहाँ आई डोंट नो जोधपुर में, if somebody is from there, कोई बड़ी स्पेशल सब्जी है उसको चोकाबाटी वो सब्जी ही 2000 रुपए किलो है। सांगरी की सब्जी खिलाई उन्होंने हमें। मैं कहा भूख दो। We don't need to go beyond 60 maybe. जो आप एक्चुअली कर रहे हो उसी को करो। You are scoring 20 perfectly fine, no issue, no tension, right? So this is score. No, but I also say in between because lot of things were happening throughout the country. तो it was there के 60 के आसपास रहना, बहुत ऊपर जाओगे तो मैम आ जाएगी, और अगर बहुत नीचे जाओगे तो भी मैम आ सकती हैं, क्योंकि आपका इतना टाउन स्कूल कैसे है. So it was, these type of news they spread like fire. कि I think maximum schools they filled 60, 62, 65, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा 20, 25, 30 will go, you will be in trouble. But See, again, if you fill it honestly, I assure you, all of us are doing good work. कोई alumni front पे अच्छा काम कर रहा है, कोई academics में कर रहा है, कोई sustainable development में कर रहा है. अब मेरा सारा 0 लगा 10 questions में. I am not doing anything, right? अब उसका next part क्या है? जहाँ जहाँ you are not doing anything, नोट कर लो वो चीजें डायरी में कि यहाँ I can get 2 more marks, यहाँ I can get 3 more marks. This is totally out of me. मेरी मैनेजमेंट कभी नहीं मानेगी. That's okay. ठीक है. उसको gradually step by step. अभी assurance है. Believe me, 2 years down the line, accreditation शुरू हो जानी है. That is the final result. So इसलिए इसको अच्छे से seriously लो और सारे स्टाफ को समझ आना चाहिए. This is what is it. नहीं तो you will go crazy teaching them. Honestly. And the teachers are doing everything. डरने की बात नहीं, स्कूलों में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि ये ऐसे कर सकते. Fine. thank you so much. The actuality is, we have to be in actuality. Ma'am wants to, what I, in precise I would like to say, we have, principals have fear कि ये नहीं भरा या कम या ज़्यादा मार्क्स आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. But it should be, you should be on actuality. Nothing will be done to you. You should, like ma'am said, you should take out the points where you have not done anything and you can do further improvement for the school. There are 80 Ma'am, you want to say? different parameters and every domain has so many subdomains, right? आप एक डोमेन में से कोई भी एक सब डोमेन पिक कर लो. आपकी प्रायोरिटी है, आप किस पे वर्क करना चाहते हो. आपको लगता है मेरे स्कूल में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. We need to bite as much as we can chew. मैं विशफुल होके ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगा. यहाँ we know our staff, we know our management, we know our parents, we know our children. Realistic होके प्लान बनाओ कि ये मैं निभा लूंगी, ये हो सकता है. My question is like there is what I feel I have not got the correct format how to submit that improvement. मैम उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है इसको मैनुअल में. Single 2 page where I've gone through the You have to fill up that page. there was a Domain 1, subdomain. These are, this is lacking, this is what I will do, this is the time frame जो APP के टाइम पे था. so that means we can take any 2 to 3 also not restricted to going on. मैम ईमानदारी की राय बताऊं, एक डोमेन में से एक ही पिक करो. That means we need to start He says experiential and all those circulars that keep coming. इतने में ही हमें सांस चढ़ जानी है. Ma'am, a beautiful question you have asked. We like you to come forward and have a gift from ma'am. Ma'am, please, yes, come forward. आज हम गिफ्ट रखा आपके लिए. Come from your side. For asking a lovely question. Lovely question. See, Anyone take out your queries if you want to ask Anyone who has about SWOT. Sure, ma'am. I'll- Just suggesting that, and you have also told about picking up one thing from one domain. But as of now, the thing is that if I don't feel that I can work on all the aspects, in any domain. Curriculum में there are so many gaps. Infrastructure में there are कुछ चीजें उन्होंने mandate करी हैं. जैसे एक infrastructure का एक security का circular आया था 13-14 पेज का. I am very sure all of us are falling short on that. आप realistically देखो कि इस 14 पेज के circular में ये 2 चीजें मैं कर सकती हूँ. आप उसको infrastructure में touch कर लो. Inclusivity है, governance है, leadership है, right?
Like we were not filling up the classroom observation forms, teachers के. उसमें questions हैं. आप, I would suggest, मैनुअल पहले सारा एक बार पढ़ लो. आपकी सारी टीम को मैनुअल समझ आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद questions पढ़ो. जो परफॉर्मा भरना है 1100 questions. You will know कि भरना क्या है. मतलब मैम, if the plan is not successful, then there are some repercussions. Nobody is going to come and police you. Okay. आप उस प्लान को आगे उसके बाइफिकेशंस करते हो कि this is where I'm lacking. Step 1. This is what I intend to do. मैम, हम दोनों में एक ही कमी हो सकती है. मेरा उसको कवर करने का तरीका कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है. So you write your plan in that. फिर उसको टाइम फ्रेम दो, फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करो, फिर उसका हमने PD, ये प्लान है, डू हमने क्या करना है, फिर उसका चेकिंग मैकेनिज्म लिखना है. कि इसको चेक कैसे करेंगे कि ये हो गया. देन उसका चेकिंग का इफ वी फॉल शॉर्ट आंसर क्या. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट, उसमें क्या है कि व्हेन यू से, लाइक सपोजिंग यू से आई वांट टू वर्क ऑन मैथ्स में करिकुलम की बात करें. यू से मैं ये करूंगी, मल्टीपल डॉजिंग टेबल्स कराऊंगी, जस्ट रैंडम एग्जांपल. मैथ्स के टीचर उसमें होंगे, साइंस के टीचर जाके क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे. इंप्रूव होएगा जब बाहर से कोई टीचर आएगा. हमने अपना ही अंदर मैकेनिज्म डेवलप करा. अब जो एक्ट वाला या चेक वाला है, हम उसमें ये नहीं लिख सकते हैं कि 100% चिल्ड्रन विल बी डूइंग द टेबल्स. Yes. नॉट एट ऑल. विंडो दो. विंडो कैसे दोगे? परसेंटेज के साथ. परसेंटेज. अगर पहले आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा 40% चिल्ड्रन आर गुड इन टेबल्स, तो यहाँ पे रियलिस्टिक गोल क्या होगा? 50 to 60%. मैं मेरे तो बच्चे बहुत ही लायक है, 70 तक भी नहीं पहुंचे. अचीवेबल भी तो 50 to 60 पापा हैप्पी हैं. So 50 to 60% गोल दैट इज रियलिस्टिक. और भी तो मोहब्बतें हैं स्कूल में, सिर्फ टेबल ही थोड़ी कराने हैं. So this is how you have to. Thank you so much. That window should be. Ma'am, please come. Please come. कोई और भी क्वेश्चन पूछो, सरप्राइज मारना. नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं होंगे. बाकी लोग भी हैं. Ma'am, if possible, if you can conduct this form workshop for all the principals. Sure, call me anytime. She already has videos. YouTube पे काफी free series है. Ma'am has a lot of series of videos on YouTube. You can find out, and you know the contact number of ma'am. You can. You just type her name on YouTube, you will get all on spot. Almost all. Okay. So we'll come up He is to. already available at every home through YouTube. Through YouTube. Thank you so much, ma'am.